हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट करंट। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है स्टेडी स्टेट करंट इन 2 ओम रजिस्टर, यानी कि 2 ओम रजिस्टर है, इसमें जो स्टेडी स्टेट करंट आ रही है वो कैलकुलेट नहीं है। सोन इन द सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है वो निग्लिजिबल यानी कि 0 मान सकते हैं। एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडेंसर सी इज 0.2 माइक्रोफेराड है। यहाँ पर गिवन है कि जो कंडेंसर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 0.2 माइक्रोफेराड है। और यहाँ पर है जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी का क्या है, 0 मान सकते हैं हम, 0 ओम। तो अब हमें क्या निकालना है, मान लेते हैं कि इसमें करंट है जो फ्लो हो रही है जो I1, और 3 ओम में रजिस्टर में I2 एंड कैपेसिटर में I3 एंड टोटल करंट है जो I करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर ये 2.8 ओम रजिस्टर है। तो अब हमें क्या निकालना है, I1 करंट की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर है, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट का मीनिंग है कि कैपेसिटर से जो करंट गुजर रही है वो 0 हो जाएगी, यानी कि I3 बराबर 0, यानी कि कैपेसिटर से कोई भी करंट पास नहीं होगी। तो अब हम क्या सर्किट को रिड्यूस करके लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 ओम रजिस्टर एंड 3 ओम रजिस्टर, एंड सीरीज में हो जाएगा किसके साथ में, 2.8 ओम रजिस्टर के साथ में। और ये हो जाएगी बैटरी हमारी 60 वोल्ट की। ये हो गया 60 वोल्ट, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, ये 2 ओम, ये 3 ओम, यहाँ पर करंट जा रही है जो I1, यहाँ पर करंट जा रही है जो I2, एंड ये हो गया 2.8 ओम, और ये टोटल करंट। अब हमें निकालनी है I1, तो I1 के लिए पहले निकालते हैं हम I की वैल्यू क्या होती है। अब हम जानते हैं V बराबर में क्या होता है, IR। यदि हमें वोल्टेज पता है, करंट निकालनी है, तो R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अब इस सर्किट का सिंपली क्या निकालना, R इक्विवेलेंट। हमें पता है कि यहाँ पर 2 रजिस्टर है, 2 ओम एंड 3 ओम, किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 2 ओम एंड 3 ओम का कितना जाएगा, 2 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 3। तो R इक्विवेलेंट की कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 1.2 ओम। लेकिन इसके साथ में क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है कितना, 2.8 ओम। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड कर देते हैं। यहाँ पर बैटरी कितनी है, 60 वोल्ट की। ये हमारी बैटरी हो गई 60 वोल्ट, ये हो गया 1.2 ओम, ये हो गया 2.8 ओम। यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है जो I, तो I की वैल्यू हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट डैश। R इक्विवेलेंट डैश की वैल्यू आएगी जो आएगी 1.2 ओम एंड 2.8 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन। हमें पता है रजिस्टर है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 1.2 ओम प्लस 2.8 ओम कितने हो जाएंगे, 4 ओम। तो इसकी वैल्यू जाएगी 15 एम्पियर, यानी कि करंट है, टोटल करंट वो है 15 एम्पियर। अब ये हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है I1 की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 बराबर में I है, तथा I1 है जो 2 ओम ब्रांच में जा रही है एंड I2 है जो 3 ओम ब्रांच में जा रही है। अब हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज है जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टर के। तो मुझे क्या निकालना I1, तो मैं निकालूंगा I1 बराबर 1/R1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 डिवाइडेड इनटू टोटल करंट। अब हमें पता है कि इसको सिंपली करेंगे तो कितना आ जाएगा, R2 अपॉन R1 प्लस R2। टोटल करंट की वैल्यू पता है 15 एम्पियर, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी, R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 ओम एंड R1 की है 2 ओम। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ओम, 2 ओम प्लस 3 ओम इंटू टोटल करंट कितनी है 15 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/5 इंटू 15 डिवाइडेड, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 9 एम्पियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर है। थैंक यू वेरी मच। In the diagram shown, find the potential difference between the points A and B and between the points B and C in the steady state. So the points A and B are here, B, A and B, and B and C. We have to find the potential difference between them. So to find the potential difference between them, what I can do is I
I can calculate how much charge is being stored between the capacitors that are between these 2 points, and then multiply the net capacitance of the capacitors that are between these 2 points to find the potential difference. So to begin with, I need to find out the total charge on this that will be stored in this arrangement. So for that, I will start by finding out the net capacitance of the circuit. So these two capacitors of 3 microfarad, they are in parallel, which means their capacitance C1 will be simply 3 plus 3 is equal to 6 microfarad. Similarly, these two capacitors of 1 microfarad are also in series. That means their net capacitance will also be 1 plus 1 is equal to 2 microfarad. Now, this arrangement of these 3 microfarad capacitors and these 1 microfarad capacitors, they both are in series with each other. So that means their capacitance C3 will be equal to C1 C2 upon C1 plus C2, which is equal to 12 upon 8, which is equal to 3 by 2 microfarad. And this entire arrangement, this entire upper branch of 3 microfarad and 1 microfarad capacitors is in parallel with this capacitor of 1 microfarad, which means the net capacitance C net becomes C3 plus 1 microfarad is equal to 3 by 2 plus 1 equals to 5 by 2 microfarad. So the net capacitance of the circuit is 5 by 2 microfarad. Now we know that C is equal to Q by V, which means Q net in the circuit is equal to net capacitance of the circuit multiplied the voltage applied. C net we just figured out is 5 by 2 microfarad, that is 5 by 2 into 10 raised to the power minus 6 farad, multiplied by the potential difference, which is given as 100 volts. So multiplied by 100, that gives us 250 into 10 raised to the power minus 6 coulomb, which means 250 microcoulombs. So the net charge in the circuit is 250 microcoulombs. Now, let's draw the circuit once again, or rather, let's look at the circuit once again. So in this circuit, as we did earlier, or as we discussed earlier when we were calculating the net capacitance, this branch is in parallel with this branch. I can show this clearly if I redraw this circuit in a different manner. So this is the capacitor of 1 microfarad, and these are the capacitors of 3 microfarad each. This is point B. These are the capacitors of 1 microfarad each, and they are connected like this. This is point A, this is point C. So as we can see, this entire branch, or this capacitor of 1 microfarad, is in parallel with this entire branch, which means this net charge will be distributed amongst these two branches equally. So that means if the charge in the upper branch is Q1 and the charge in the lower branch is Q2, then Q1 should be equal to the capacitance of the upper branch, which will be C3. So C3, and since
these two branches are in parallel, the potential difference will still remain the same. That is equivalent to the potential difference due to the battery. So 100 volts, which means Q1 is equal to 3 by 2 into 100, which is equal to 150 microcoulomb. Now, since this arrangement or this setup of two parallel capacitors and this setup of two parallel capacitors, they both are in series, so the charge Q1 will be equal in both of them. That means the charge in this setup, which has a capacitance of C1 is equal to 6 microfarad, C1, and this is C2. So the charge in C1 will be equal to Q1 because C1 and C2 both are in series, and Q1 is the charge that is flowing through this branch. So the potential difference between A and B, since between this point A and between this junction there is no other electronic device, so I can move this point A right to the junction. So the potential difference between A and B will be equivalent to the potential difference of this setup of capacitors or this arrangement of capacitors. So the potential difference VAB can be written as charge Q1, because charge Q1 is the charge that is flowing through this setup, divided by the capacitance, which is C1, which is equal to 150 upon C1, which was equal to 6, which is equal to 25 volts. So potential difference between AB is equal to 25 volts. Similarly, the potential difference between BC, I can move this point C right to the junction. So the potential difference between BC will be equal to VBC will be equal to the charge divided by the equivalent capacitance between them, which is C2. So Q1 is 150 microcoulomb. So 150 divided by C2, and the value of C2 we calculated as 2 microfarad. So 2 microfarad, which gives me 75 volts. VBC is equal to 75 volts.